electrochemistry. I think so. It's getting a bit blur picture. Am I right? Just a second, hold on. Okay. Okay. We have started yesterday with the chapter called electrochemistry, or as I stated, this chapter is divided into 3 parts. First part of the chapter consists or comprises of fundamental definition, fundamental concepts. Middle part of the chapter consists of core concept of electrochemistry, and the third section of the chapter consists of applied part of the principles of this electrochemistry. Got it? So, what are the fundamental definitions we have to discuss in first part of the chapter? Number 1, we have seen this is the chapter which is related with the energy, and we know it very well. One form of energy can be converted into another form. So that is, energy can neither be created nor be destroyed, but one form of energy can be converted into another form. And for this conversion, we need a device. And here, electrochemistry, electrochemical cell is the device. Electrochemical cell is the device which converts chemical energy into electrical energy, at the same time, electrical energy into chemical energy. So that is, for that we need a device. And these electrochemical cells are again classified into 2 categories. Number 1 is a galvanic, Daniel or voltaic cell, which converts chemical energy into electrical one. And on the other hand, we have another cell, that is, you can say, electrolytic cell, which converts, that is, electrical energy into chemical one. So these are the 2 types of devices or cells what we discuss here in the chapter. Whatever cell it may be, both of the cells uses redox reaction. So what is redox reaction? Redox reaction is a simultaneous reaction of oxidation and reduction. So what is oxidation then? We should be very clear with this oxidation. We have seen it in 11th standard. Loss of electron is called as oxidation process, and gain of electron is called as reduction process. Whenever any atom species loses electron, that process is called as oxidation. Whenever any atom or species gains the electron, it's called as a reduction process. And it is always a simultaneous process. One of the species loses electron, another species gains the electron. And this process is called as a redox reaction. That is what we can say. So redox reaction itself is a combination or simultaneous process of oxidation and reduction. That is also what we have seen here in the chapter. Bit going ahead, here in the chapter we have seen that there are some fundamental definitions. Out of that, number 1 definition what we have seen here is nothing but what is conductance. Conductance is a charge transfer from one point to another point is called as a conductance. So we have seen that. So this is the definition note. Still it is written on the board. Conductance is a charge transfer from one point to another point is called as a conductance. And we know very well, this conductance occurs by 2 different ways, and that's why there are 2 different conductance are given here. Number 1 is metallic conductance, and number 2 is electronic or ionic conductance. So whenever charge transfer occurs with the help of electrons to the material, then that is called as metallic conductance. And whenever charge transfer occurs with the help of ions, that is called as an electrolytic conductance or ionic conductance. Very important. Scenario. Conductance is a charge transfer. So when this charge transfers from one point to another point occurs with the help of electrons in metal or through the material, then that is called as metallic conductance. Or whenever this charge transfer occur with the help of ions, that may be a cations or that may be anions, that is called as electrolytic or ionic conductance. So this is what we have seen here in this one. Furthermore, here in the chapter, we are here in electrochemistry, we should be very clear, we are not dealing with the transfer of charge with the help of electrons. This is not part of the chemistry, this is the part of physics what we discuss, and this is the part of chemistry. Because when we deal with the electrochemistry, we have to deal with the solutions, and these solutions has to study the conductance of this solution. We have to study here in this electrolytic or ionic conductance, and that is nothing but you can say here electronic conductance, electrolytic conductance, which occurs maybe due to the cations or maybe due to the anions, and that is what we discuss here in this one. Now,
Still, we need to clear some of the definitions mathematically. So this is the definition of conductance. Conductance is nothing but the reciprocal of resistance. Or also there is another definition of conductance. Conductance is denoted by G, and conductance is directly proportional to cross-sectional area and inversely proportional to length of wire. So G is directly proportional to A, inversely proportional to L. इसे solve करते हैं तो instead of this proportionality we can bring it K, and that is G is equal to K A upon L is the topic what we get here. ये हम लोग यहाँ पे मिल जाता है. So G is a conductance, K is the conductivity. Be clear here. Conductance is this and conductivity is this. There is a lot of difference between conductance and conductivity. Conductance is denoted by G and conductivity is denoted by K. So this is conductance, this is conductivity. This is cross-sectional area and this is length of the wire. So that is what we can see here in this one. Now, अभी ये भी देखा कि अगर cross-sectional area 1 होता है और length of wire 1 होता है, so G must be equal to K, जो हमने यहाँ पे लिखा है. So conductance is nothing but the conductivity, or conductivity is nothing but the conductance. That is what we get here. ये हमने देखा है. उसके बाद हमने ये भी देखा, that is you can say resistance. Resistance का ये definition था, resistance is the reciprocal of G. चाहे तो resistance हम और अलग तरीके से define कर सकते हैं जो physics में आपने किया है ना? उसे भी मैं कर देता हूँ. That is you can say ये heading लेता हूँ यहाँ पे. This you can say resistance. Resistance which is denoted by R. Okay. Now thing is that this resistance के अगर हम लोग physics के definition देखते हैं तो resistance is nothing but you can say V upon I. This is the resistance. So this is you can say potential difference divided by the current in ampere I. ये होता है. And the unit of this resistance is ohm. So unit of this resistance is ohm. That's why. And being conductance is the reciprocal of resistance, here its unit is nothing but you can say per ohm. So the unit is per ohm. यहाँ पे मिल जाता है because it is reciprocal of that, and that's why the unit of conductance is per ohm, being it is a ohm. So this is the unit of resistance. So this is the definition जो already अपने physics में देखा हुआ है. यहाँ पे भी याद रखिएगा कि resistance is potential difference divided by the current V upon I. And also it can be defined that it is a reciprocal of conductance. और conductance होता क्या हमने यहाँ पे देखा तो resistance भी क्या होगा? Resistance is directly proportional to length of wire and inversely proportional to cross-sectional area A. इस तरीके से हम लोगों को मिल जाता है. So we can say R is equal to rho L upon A हम लोग इसका मिल जाता है. तो L is equal to 1, A is equal to 1 पुट करते हैं तो rho R is equal to rho इतना हम लोगों को मिल जाता है. तो R is equal to rho इतना हम लोगों को मिल जाता है. This is you can say resistance is equal to resistivity. R is the resistance. Here is nothing but the R. This R is nothing but the resistance, and this is nothing but the resistivity. Resistivity is this rho. So resistivity भी हम define कर सकते हैं और conductivity भी हम define कर सकते हैं. What is conductivity and what is resistivity? दोनों हम define करने जाते हैं. तो conductance of unit cube material is called as conductivity, and resistance of unit cube material is called as resistivity. Unit cube material because length is also 1. So that's why resistance of unit cube material is called as resistivity, and the conductance of unit cube material is called as conductivity. These are the two definitions which are also clear with this: resistance, resistivity, conductance, and conductivity. That is what we got the definitions we get clear with this. Now, these are fundamental definitions or fundamental concepts what we need to be clear while interacting with the chapter. अभी एक बात और क्लियर है कि हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि कंडक्टेंस दो टाइप का होता है. एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो मेटल के थ्रू होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा जो होता है वो सॉल्यूशंस के थ्रू होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की हम बात करते हैं, आयनिक कंडक्टर्स की बात करते हैं. और ये बात पहले यहाँ पे हमने क्लियर की कि दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. That means there should be a electrolytic conductance, that is solution or ions, and ions का conductivity क्या है हम लोग वो डिस्कस करते हैं. कल मैंने एग्जांपल दिया, हमारे घर के अंदर भी वाटर आता है, कॉर्पोरेशन का वाटर आता है, और वो जो वाटर होता है वो प्योर फॉर्म नहीं होता है, केमिकल, and that's why that water may act as a conductor. Pure water अगर लेते हैं which is free from all the ions, then it is a non-conductor of electricity. याद रखिएगा, pure water is a non-conductor of electricity, but pure water doesn't mean free from only biological agent. Chemistry में pure water means only containing H2O. It is free from all the ions. Either that may be a soft ions, or there may be hard ions. जो हम hard water और soft water की बात करते हैं, no.
Chemically pure water means consisting of only H2O. That's why that water do not contains any ions. And if there isn't any ions, then that solution must be a non-conductor of electricity. That is what. But in chemistry, we are dealing with electrolytic conductance. Matlab, we have to discuss the conductivity or conductance of the solutions. Conductance and conductivity of the solutions. और वो अगर हम deal करते हैं, तो we have to deal with the solutions. तो हम अलग-अलग solutions compare कर सकते हैं. हम NaCl का solution ले सकते हैं, हम लोग एसिडिक एसिड का solution ले सकते हैं, हम लोग ग्लूकोज का solution ले सकते हैं, हम सुक्रोज का solution ले सकते हैं. और सबका कंडक्टेंस अगर हम मेजर करते हैं by using the conductivity cell. Conductivity cell नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कितना है. और कोर्नोस नाम के साइंटिस्ट ने कंडक्टिविटी मेजर करने के कुछ और भी तरीके दिए हैं जिससे हम लोग कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं सॉल्यूशन का. और इसलिए हर सॉल्यूशन का कंडक्टेंस अलग है. अभी सॉल्यूशन हम जब बनाते हैं से हम लोग NaCl पुट करते हैं पानी के. अगर मैं सारे बच्चों को बोलता हूं कि आपको NaCl का सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके अंदर भी देखिए कितने पॉसिबिलिटी आते हैं. नंबर एक पॉसिबिलिटी आती है कि NaCl कितना लेना है और वो कितने वाटर में डिसॉल्व करना है. कोई हो सकता है हाफ लीटर वाटर लो, कोई हो सकता है 1 लीटर वाटर लेगा, कोई हो सकता है 200 ml लो, कोई हो सकता है 700 ml लो. और उसके अंदर NaCl कितना पुट करना है, कोई 1 मोल पुट करेगा, कोई 1 ग्राम पुट करेगा, कोई 10 ग्राम पुट करेगा, लाइक दैट, अलग अलग. सो सब लोगों को अगर कुछ ऐसा स्टैंडर्ड बना के नहीं देंगे तो सब लोगों का सॉल्यूशन अलग होगा, और सॉल्यूशन अलग होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा, उसके अंदर प्रेजेंट आयंस भी अलग होंगे. और अगर अलग अलग आयंस होते हैं तो उसका कंडक्टिविटी आयंस के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज this is the electrolytic conductance which depends upon the ions, and that's why different solution का conductance different रहेगा, because different solution has different concentration and different number of ions present in that. So different रहेगा. So how we are going to measure that, and that's why these terminology are not in chemistry. We have to bring out or we have to identify the new terminologies. एंड न्यू टर्मिनोलॉजी की अगर बात करते हैं हम लोग तो उसके अंदर एक मोलार कंडक्टिविटी करके एक टर्म आती है, एक मोलार कंडक्टिविटी टर्म आती है जो हमें डिस्कस करना जरूरी है. सो लेट्स मूव नाउ. केमिस्ट्री में डील करना है तो कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, दीज आर नॉट द राइट टर्म्स. वी शुड हैव सम अनदर टर्म एंड दिस इज नथिंग बट द मोलार कंडक्टिविटी. सो लेट मूव टू नेक्स्ट, दैट कॉल्ड मोलार कंडक्टिविटी. This is molar conductivity. So, in case of chemistry, in case of solutions, the conductivity is not the right term. So, we use the term called as molar conductivity. Now, what is this molar conductivity? इसके दो डेफिनेशन आते हैं, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आता है और थ्योरेटिकल डेफिनेशन. मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय दिस लैम्डा, उल्टा v, उसे लैम्डा कहा जाता है. जनरली हम लोग लैम्डा ऐसे लिखते हैं, सी दिस इज लैम्डा. Okay, this is lambda. So generally lambda इस तरीके से निकाला जाता है. ये lambda आप जानते हो. This is the small lambda and this is nothing but the capital lambda. उल्टा v is a capital lambda उसे बोला जाता है. So molar conductivity is denoted by capital lambda. So this is read as a lambda, capital lambda. Okay. Now mathematical definition आता है, lambda is equal to k upon c. This is the mathematical definition of molar conductivity. So mathematical definition easy है. K जिसके अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं, जिसके अंदर हम अच्छी तरह lambda is nothing but you can say molar conductivity. Okay, K is nothing but conductivity and C is nothing but you can say concentration. These are the terms. So this is the formula which is called as a formula of molar conductivity, also called as a mathematical definition of molar conductivity, जिसके अंदर lambda indicates molar conductivity, K indicates the conductivity and C indicates the concentration of the solution. So molar conductivity is K upon C, that is conductivity divided by concentration of the solution, is called as a molar conductivity. This is the mathematical definition. When it comes to the theoretical definition, so there is a second definition called as theoretical. See, suppose we have this container. This container has two electrodes
two electrodes dipped in this. Two electrodes. किसी भी सेल्स के अंदर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स, बाद में देखेंगे हम इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इसी चैप्टर में डिटेल में देखेंगे इलेक्ट्रोड्स किसके बनते हैं, कैसे काम करते हैं वगैरह. So these are the two electrodes we are dipped in this solution. This solution has this container has this solution. This container has this solution. Okay, now this is connected to galvanometer, whatever that वो वहाँ पे connect किया जाता है. Okay, अभी suppose कि this is the solution of NaCl. ये कौन सा solution है? NaCl. This concentration should be 1 molar. Concentration कितना होना है? 1 molar. अभी concentration का formula क्या होता है? Concentration is equal to N upon V. N upon V. और concentration 1 molar है, इसका मतलब 1 molar is put into 1000 centimeter cube of water. तो ये जो water है 1000 centimeter cube मतलब ml, मतलब 1 liter water. 1 liter water के अंदर 1 mole of NaCl is put. This becomes the standard solution. तो अगर मैं बताता हूँ कि सारे बच्चों को कि आपको 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl बनाना है, तो आप देखिएगा कि किसी का कंटेनर किसके अंदर 1 लीटर पानी दिया जाएगा, जिसके अंदर 1 मोल ऑफ NaCl पुट किया जाएगा. दैट बिकम्स अ 1 मोलर सॉल्यूशन. और इस 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन अ सच अ दैट that covers all the solutions, and then the conductivity of this solution is measured. Conductivity of this solution is measured. Conductivity of solution measure करने के लिए conductivity cell होता है, एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं. रेडीमेड डिवाइस होता है. ओके, सो उस डिवाइस से हम लोग मेजर कर सकते हैं. सो नाउ दिस इज द सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड एज 1 मोलर सॉल्यूशन. दैट मींस 1 मोल ऑफ solute is put into 1 liter of water or solvent, whatever the solvent, and this is called as 1 molar solution. और इस सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टिविटी होगा, that is nothing but the molar conductivity. The reason behind that, 1 mole of electrolyte is dissolved into 1 liter of water, and that concentration becomes 1 molar concentration. And whatever the conductivity of the solutions in which 2 rods are dipped, 2 electrodes are dipped, which covers all the solution, then the solution shows molar conductivity. Solution का जो भी conductivity होगा, उसे हम लोग molar conductivity ऐसा कहते हैं. All of you clear with this? So molar conductivity is a suitable term which is used in the chemistry. Conductivity is not the right term, so that's why we need to bring it molar conductivity. Or this molar conductivity has 2 definitions. One is theoretical definition, another is mathematical definition. So this is the mathematical definition. Molar conductivity is equal to K upon C, and this is theoretical definition in which the conductivity of 1 molar solution in which 2 electrodes or 2 rods or 2 electrodes are dipped, which are sufficient to cover all the solutions, and whatever is the conductivity of the solution is called molar conductivity. Clear with this? Now, molar conductivity term तो हो गया क्लियर, मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, थ्योरेटिकल. बट अब इसके अंदर और एक प्रॉब्लम आता है कि इसके अंदर जो ये सोल्यूट पुट किया हुआ है, ये सोल्यूट के 2 टाइप होते हैं. These solutes or these substances can be classified as electrolytes and non-electrolytes. अब देखिएगा, so we can have the matter or substances. Substances are classified as you can say non-electrolyte and दूसरा electrolyte. Big learning. Substances are classified as non-electrolytes and electrolytes. Non-electrolyte के अंदर आता है sugar, starch, alum. These are the substances. और electrolytes के अंदर आता है all salts, acid, and base are comes under this category of electrolytes. These electrolytes are again of 2 types. These electrolytes are again of 2 types. Number 1, that is called as the strong electrolyte, and this is you can say called as your weak electrolyte. Strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolyte consists of strong acid, strong base, and all the salts are counted here in strong electrolytes. Weak electrolyte consists of weak acid, weak base, and sparingly soluble salts. Sparingly soluble salts counts to be these weak electrolytes. Weak acid कौन है? हम जानते हैं acidic acid CH3COOH. Weak base कौन है? तो हम जानते हैं NH4OH. These are the weak base. Sparingly soluble salt कौन सा है? तो AgCl. These are the examples of this weak electrolytes. Strong electrolyte के लिए strong, any strong acid, say it's HCl, H2SO4. Strong base, say it is NaOH, or any of the salts, say it is NaCl or KCl. This comes under the category of strong electrolytes and weak electrolytes. Now, these definitions matters a lot. This definition matters a lot. What is strong electrolyte and what is weak electrolyte?
कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फर्दर कॉन्सेप्ट्स. Strong electrolyte is the substance which dissociate completely. This is the substance which dissociate completely. Complete dissociate. And this is the substance which dissociate partially. So we can say dissociate partially. Yeah, बहुत important है term यहाँ पे इसके लिए. So this is what we can say here. किसी भी substance का strong electrolyte dissociate complete और weak electrolyte dissociate partially. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर हम HCl, NaOH या फिर NaCl का 1 मोल पानी के अंदर पुट करते हैं, कितना मोल पुट करते हैं? 1 मोल. 1 मोल पानी के अंदर पुट करते हैं, वो पूरा का पूरा डिसोशिएट होता है, पूरा का पूरा डिसोशिएट होता है. दैट मींस 1 mole of HCl process, हम जानते हैं 1 mole contains how much ions, how much particles? 1 mole of any substance consists 6.022 into 10 raised to 23 particles. That is molecules. तो HCl के molecules कितने होंगे? 6.022 into 10 raised to 23 1 mole के अंदर. And all these molecules 6.022 into 10 raised to 23, all the molecules dissociate completely. किसी भी strong electrolyte, किसी भी strong electrolyte, ये 1 mole लेते हैं, हमने देखा है already we have said there is 1 mole, मतलब 1 mole is put into this V, so N is equal to 1 upon V. 1 mole is put into V decimeter cube और V कितना होता है? 1 liter. ये भी पता है मैंने, 1 liter. So 1 liter water के अंदर इसका 1 mole put करना है और 1 mole consists of 6.022 into 10 raised to 23 particles. 1 mole consists of 6.022 into 10 raised to 23 molecules और particles. ये आप अच्छी तरह जानते हो. So इसका मतलब है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं और वो पूरे की पूरे डिसोशिएट होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में. और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पार्शियल डिसोशिएशन होता है. पार्शियल मतलब 100 में से 1-2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे, बाकी सारे मॉलिक्यूल अनडिसोशिएटेड फॉर्मेट में रहेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पार्शियल डिसोशिएशन मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल्स, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट्स and most of the molecules remains in undissociated format. That means अगर हम लोग एसिडिक एसिड लेंगे, हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या फिर AgCl लेंगे, तो इनमें से बहुत कम मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होते हैं और इनके सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोशिएट होते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज अ डिफरेंस ऑफ बिटवीन दिस टू. समझ रहे हैं आप लोग? सो when we talk about the substances are classified into non-electrolytes and electrolytes. Electrolytes are the non-electrolytes are the substances, they do not dissociate at all. वो dissociate होते ही नहीं है. Sugar, alum, starch, ये substances dissociate होते ही नहीं है, dissociate नहीं होते. ये substances dissociate होते. Electrolytes are the substances which dissociate and produces ions. अभी देखिए उसका एग्जांपल ऐसा है कि हम शुगर लेते हैं और शुगर का सॉल्यूशन बना के उसको अगर करंट अप्लाई करते हैं तो that shows the non-conductance. पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व करने के बाद that shows non-conductance. If there is a sugar and water is a pure, हमारे घर में प्योर वाटर होता नहीं है. That's why don't do such type of experiment at home. लैब में करेंगे, टीचर के अंडर ऑब्जर्वेशन में करेंगे. अगर हम लोग शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं और शुगर सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी चेक करते हैं तो it will observe zero conductivity. The reason behind that, sugar do not produces ions, neither cations nor anions. These are the substances which dissociate and produces ions, that is cations or anions. दोनों प्रोड्यूस करते हैं. These are called electrolytes. Electrolytes के अंदर एसिड्स आते हैं दुनिया के सारे, बेस आते हैं और सॉल्ट्स आते हैं. और इसके अंदर दो कैटेगरीज होते हैं, strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolytes are the substances which dissociate completely. They dissociate completely. And weak electrolytes are the substances which dissociate partially. Partially मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी उसका dissociate होता है. That is very important. So in that sense, strong electrolyte consists of all strong acids, all strong base, and all the salts almost. And weak electrolyte consists of weak acid, weak base, and maybe some sparingly soluble salt. So that is what we can say here: weak electrolytes and strong electrolytes. Why this matters? Why this matters? The reason behind that we are here with this molar conductivity. If we discuss the molar conductivity of strong electrolytes, it will be different. If we discuss the molar conductivity of weak electrolyte, it will be different. So molar conductivity of weak electrolyte is different. Molar conductivity of strong electrolyte will be different. The reason why, आप देखिए, suppose this is the 1 liter water, और इस 1 liter water के अंदर हम NaCl पुट करते हैं, NaCl strong electrolyte की कैटेगरी में आता है. NaCl का डिसोसिएशन कंप्लीट होगा
it will produce 6.02 into 10⁻23 multiplied by 2. इसके अंदर 2 आयंस है, कैटायंस आयंस 2 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उतने आयंस मिलेंगे और ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 2 इतने आयंस मिलेंगे अगर हम इनिशियल पुट करते तो, एंड इसका जो कंडक्टिविटी होगा वो मैक्सिमम होगा, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम बिकॉज़ इट डिसोसिएट कंप्लीटली, इट विल शो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी बिकॉज़ सारे के सारे आयंस यहाँ पे डिसोसिएट हो चुके हैं। अगर हम इसके बदले दूसरा केस डिस्कस करते हैं, हमने मानो एसिडिक एसिड ले लिया इसके अंदर, इंस्टेड ऑफ इनिशियल हमने देखा यहाँ पे लिया एसिडिक एसिड। अभी एसिडिक एसिड डिसोसिएट बहुत पार्शियली होता है, बहुत कम होता है, और एसिडिक एसिड जब पार्शियली डिसोसिएट होगा, एसिडिक एसिड जब पार्शियली डिसोसिएट होगा तो इसके आयंस भी बहुत कम होंगे, यहाँ पे आयंस बहुत कम होंगे, और उसके आयंस अगर कम होंगे, कम आयंस होने के कारण, आयंस कम होने के कारण इसका कंडक्टिविटी भी क्या होगा, कम होगा। सो दो इनिशियल पुट किया, उसका भी 1 मोल हमने पुट किया था, लेकिन आयंस बहुत ज्यादा मिलते हैं। हमने एसिडिक एसिड पुट किया, उसका भी 1 मोल पुट किया, लेकिन आयंस बहुत कम मिलते हैं। तो इनिशियल का कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा और एसिडिक एसिड का कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगा बिकॉज इट डिसोसिएट पार्शियली, isn't it? So because of which we have to enter into the next concept which is very important because of these two concepts, what is weak electrolyte and strong electrolytes. Yeah, with this just go through it, so please. Yes, everyone got it. So let's move now. There is molar conductivity for this solutions.
Now see, suppose we have a strong electrolyte and here we have here weak electrolyte. So strong electrolyte dissociate completely. So suppose we are taking NaCl, it dissociate completely to produce 2 into this much ions. This much ions are produced, and that is nothing but you can say max ions which this NaCl can produce. 1 mole of NaCl can produce. This is the max ions. अभी हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और उसका कंडक्टिविटी अगर मेजर करते हैं तो ये सिंपल सी बात है कि इसके अंदर मैक्सिमम आयंस कितने हैं तो 2 into this much. So whatever the conductance it shows, that will be a maximum. उससे ज्यादा वो कंडक्टेंस दिखा ही नहीं सकता, उससे ज्यादा कंडक्टेंस वो दिखा ही नहीं सकता, बिकॉज इसके अंदर आयंस ही इतने हैं. इससे ज्यादा आयंस आएंगे कहां से? वहां से तो नहीं आएंगे, बिकॉज इट इज वन मोलर सॉल्यूशन. So whatever the conductance it shows, that is nothing but you can say maximum conductance, maximum molar conductance denoted by lambda naught. Be clear? Molar conductivity is denoted by lambda, and this is maximum molar conductivity, which is denoted by lambda naught, and which is shown only by strong electrolytes. So if we get the molar conductivity, we'll get the maximum molar conductivity. So maximum molar conductivity is shown by the solutions which are of strong electrolyte. So 1 molar solution of strong electrolyte which dissociates completely, and it will show the maximum molar conductivity. And weak electrolyte shows the molar conductivity like lambda. So in case of any of the weak electrolyte, this molar conductivity is denoted as lambda. And in case of strong electrolyte, this molar conductivity is always max, that is lambda naught. And this is lambda naught is the maximum molar conductivity what we have here. Clear with this? So this is the difference, that is lambda naught and lambda. That is what we discussed over here. So when there is a strong electrolyte, this molar conductivity always read or denoted as lambda naught. When it is a weak electrolyte, its molar conductivity is denoted as lambda. That is what we can say. ये इसके अंदर का difference आ ही जाता है. Nothing I think is that there are 2 more factors which impact or which has the impact over this molar conductivity, and that is nothing but you can say relation between molar conductivity and volume, or you can say concentration. So we have to discuss how it is related with this one. So next is relation between molar conductivity and concentration, you can say. Though this is the mathematical definitions, let's move to molar conductivity. So we have here relation between molar conductivity and concentration, C, lambda and C. So heading is relation between molar conductivity and concentration. अब देखिए, what is the concentration term? Concentration क्या होता है? Concentration होता है that is moles per volume. Moles per volume होता है. अभी suppose 1 mole is put in 1000 ml of water, 1000 ml of water, and this is 1 mole. So this is nothing but the concentration. So we can say here C upon 1000 is the concentration what we can see here. ये हम लोग को मिल जाता है. Now, so but one term is that we know very well. When we see the concentration is n upon V, n is 1 upon V. That is what gets. ये जो basic formula है. This is the basic formula already हमने देखा हुआ है. Concentration is n upon V. N is the number of moles upon V. तो हमने mole कितना लिया? 1 mole लिया है, and this is the volume. So this is the relation between C and V. C and V का ये relation होता है. Okay. So when we have calculated the V, so therefore V is equal to 1 upon C. Or 1 upon C is this nothing but you can say 1 upon यहाँ पे आएगा C is the concentration, that is concentration upon 1000. ये ऊपर जाएगा तो you can say 1000 upon C. This is what it is. So relation between V and C is this. और हमने यहाँ पे देखिए we have formula lambda is equal to K upon C. Okay. तो K upon C अगर मुझे put करना है, so relation between V and this. So lambda is equal to, instead of हम जानते हैं C is 1 upon V. So there will be a lambda, there will be K into V, or V is 1 upon C. 1 upon C is 1000 upon C. So that's why lambda is equal to 1000 K upon C.
This is the relation between lambda and concentration what we get here. तो मैथमेटिकली जितने सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, मैथमेटिकली जितने सारे सॉल्यूशंस करेंगे, इसके अंदर ये फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा. दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पीआरसी. सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पीआरसी. बट हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वी हैव टू हैव द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम. सो कंसंट्रेशन इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन. सो वी गॉट हियर कंसंट्रेशन अपॉन 1000, दैट इज वॉल्यूम ml, और वो हम पुट करते हैं, तो वी हैव फाइनली दिस रिलेशन प्रूव होता है, that is lambda is equal to 1000 k upon c. तो जितने सारे न्यूमेरिकल्स हम कैलकुलेट करेंगे, हमें अगर एक्चुअली कहीं मोलर कंडक्टिविटी मेजर करना पड़ता है, तो 1000 k upon c से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, 1000 k upon c. This is the formula what we have to use for the calculating the values in numericals. काफी सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, न्यूमेरिकल आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं. This is simply the mathematical definition, but this won't work. This is the relation actually between lambda and c, and that's why when we have to solve the numericals, we have to have this formula, because it gives the relation between concentration and molar conductivity, that is lambda. So ये याद रखिएगा ना, this is the formula हमें याद रखना है, और इसी के आधार पर हम सारे numericals solve करेंगे. Clear with this? हाँ, यहाँ पर जो हमने देखा कि this is lambda is equal to k into v, तो molar conductivity depends upon the concentration term. Molar conductivity also depends upon the dilution, that is volume term. उसके अंदर भी दो कैटेगरीज आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अलग बात आती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की अलग बात आती है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे मैंने बताया कि इट शोज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी. ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इट शोज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, एंड दैट्स व्हाई देयर इज वन साइंटिस्ट, बिग लेवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये पहली बात है, और दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरी बात. ओके, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस अलग है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस अलग है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शोज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कॉल्ड एज लैम्डा, एंड दिस शोज द लैम्डा. Yeah. Now, this is the maximum molar conductivity which is shown in case of strong electrolyte. Okay, this also this is not affected by the dilution factor. This is not affected by dilution factor, but this is affected by the dilution factor. So that's why Kohlrausch is the scientist who tried to derive the relation between lambda naught and lambda, and the Kohlrausch scientist. Kohlrausch is the scientist who derived relation between this. According to him, lambda naught is equal to lambda minus a into root c. Sorry, lambda is equal to lambda naught minus ऐसा. So this is the relation called as Kohlrausch law. Be clear. This is the maximum molar conductivity for strong electrolyte, which is also इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, because it is the maximum conductivity which it can show. जैसे कि मानो इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं, हर एक का अपना एक एनर्जी है, अपना एक कैपेसिटी. मानो हम लोगों को सबको वेट लिफ्ट करने के लिए बोला जाता है, हम सब है, हमको वेट लिफ्ट करने के लिए बोला जाता है. सबका अपना अपना कैपेसिटी है. कोई 20 केजी का वेट उठाएगा, कोई 50 केजी का वेट उठाएगा, कोई हो सकता है 60-70 केजी का वेट उठा सकता है. मानो एक बंदा है हमारे अंदर की जो 70 केजी का वेट उठा सकता है. अभी देखिए 70 केजी सबसे हाईएस्ट है हमारे हम लोग. उसके बाद उसे 1 केजी का भी वेट नहीं उठ सकता, मतलब 71 केजी. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्या यार तुम लोग 1 केजी भी वेट नहीं उठा सकते हो. एक्चुअली 70 इज अ मैक्सिमम व्हिच ही कैन लिफ्ट, और उसको हम और 1 केजी ऐड कर रहे हैं, तो इट्स सिंपली इम्पॉसिबल. बोलने के लिए बोल सकते हैं हम लोग यार 1 केजी भी नहीं कर पा रहे, बट इट हैज ऑलरेडी लिफ्टेड अप टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, दैट इज 70. उसके बाद नहीं हो सकता. उसी तरीके से दिस इज द सॉल्यूशन व्हिच इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, जो डिसोसिएट कंप्लीटली होता है, सारे के सारे आयन प्रोड्यूस करता है, और वो इतना ही कंडक्टिविटी दिखा सकता है, दैट इज लैम्डा नॉट, ज्यादा नहीं दिखा सकता. और ये जो सॉल्यूशन है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो दिखाता है वो लैम्डा नॉट. इसके ऊपर डाइल्यूशन का, कॉन्संट्रेशन का इंपैक्ट होता है, इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं होता है, और इसलिए दोनों का रिलेशन करके कोहलरॉश साइंटिस्ट ने ये रिलेशन किया, हाउ लैम्डा एंड लैम्डा नॉट आर रिलेटेड विद ईच अदर. तो अकॉर्डिंग टू कोहलरॉश, lambda is equal to lambda naught minus a into root c. So a is a constant depend upon the nature of the substance. हर substance का a अपना अलग है, मतलब HCl का अलग है, H2SO4 का अलग है, वो अपने अपने substance का अलग है. And this c is nothing but the concentration. So root c is nothing but the concentration. So how they are related with this one? तो अगर हमारे पास lambda naught है, a है और concentration है, तो we can calculate the lambda. This is according to Kohlrausch. और उसके ग्राफ भी दिया Kohlrausch ने, तो we can have a look over this graph. So this is the graph where we can say this is the conductivity and this is, you can say, concentration. Root of C, root of concentration. Now, अगर हम लोग weak electrolyte की बात करें, तो we got this curve. This is for the weak electrolyte.
हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इस तरीके से होता है. सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो सी दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो दिस ग्राफ विल इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है. दिस इज नथिंग बट वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, लैम्डा लिया है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड दिस विल बी मैक्सिमम लैम्डा कंडक्टिविटी हियर. दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस ग्राफ को y पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है. इट शोस द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी. whereas वीक इलेक्ट्रोलाइट इसे इंटरसेक्ट करता ही नहीं है, ऐसा चलता चलेगा. मतलब पूरी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी डिसोशिएट होता नहीं. दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट कर्व. ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी पूरा तरीके से डिसोशिएट होगा नहीं. दैट्स व्हाई ये कभी यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उसका मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते. मतलब खास करके कंडक्टिविटी सेल से मेजर नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव दिस थ्योरेटिकल फॉर्मूला. और इसलिए कोलरस ने एक लॉ हमारे सामने रखा. वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा कि उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैटर करता है. वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो कितना डिसोसिएट होगा. मानो 1 लीटर वाटर के अंदर इसका डिसोसिएशन 0.1 है, तो 2 लीटर के अंदर 0.2 होगा, 3 लीटर के अंदर 0.4 होगा, ऐसा बढ़ता 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 जाएगा. 0.3 0.4 ऐसा बढ़ता जाएगा, बिकॉज इट डिसोसिएट मोर विद डाइल्यूशन. सो molar conductivity of weak electrolyte is affected by the dilution, whereas this is not, because number of ions remain the same. Here number of ions increases. So the dilution or volume affects the molar conductivity of weak electrolyte, and that's why we have to have the Kohlrausch law to calculate the maximum molar conductivity of weak electrolyte, and that is called the Kohlrausch law. We'll discuss Kohlrausch law in tomorrow's lecture. Till then, thank you very much. Bye bye. See you.